Good morning, students. Good morning to all of you. Let's start. First, we'll start with the revision, and after that, today's topic is very important from exam point of view. That is accounting standard for consolidated financial statements. And students, I want 100% focus in today's session because first session is very important to uh, make your basics very strong. Okay, so please in today's session have 100% focus because I'm going to teach you about all working notes, and working notes are very important in this chapter. If you complete your working notes and if you divide your pre-acquisition profit and post-acquisition profit correctly, these problems are very easy problems. Okay, so let's start. Before starting any session, we will revise fundamentals. चलो तो हर्षल पाटिल, वेरी गुड बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. चलो बेटा स्टार्ट. सर बेसिक से करूँ ना स्टार्ट, मतलब हाँ जो हाँ, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, पी एंड एल प्रोफॉर्मा एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वार्म अप. ओके सर. So यस, asset स्टार्ट. have debit balance, liability have a credit balance, capital have a credit balance, expense debit balance, income credit balance. Personal account debit the debtor, credit the creditor. In settlement relationship, debtors become a giver, creditors become a receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Now balance sheet performer. Balance sheet हर्षल, particulars. पेजेस क्यों देख के बता रहे हो? हाँ हाँ Sir, हर्षल, विदाउट लुकिंग इनटू बैलेंस शीट आपने को चीटिंग थोड़ी करना है. नहीं याद क्या आपको? गलत ना हो जाए इसलिए देख रहा था. होने दो ना गलत. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. विजुअल भी है, विजुअल. वो गलत हुआ तो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल दो आप पहले, फिर बैलेंस शीट पे आओ. ठीक है सर, ठीक. हाँ चलो, विजुअल उसको हेल्प कर देना. वो AS गलत one, हुआ तो. AS1 disclosure and preparation of financial statements. AS2 changes in inventory. AS3 cash अरे flow रॉन्ग statement. रॉन्ग है बेटा. विजुअल आप बोलते भी नहीं हो रॉन्ग है करके. सर मैं वही बोलने आ रहा था कि हाँ गलत तो बोल बोलो दिया ना, सर. उसको बीच में टोक दो ना. अच्छा ठीक है सर, गलत था ये. चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी था पहला AS2 वाला. yes, changes in inventory था, right? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. Okay, valuation of AS2 valuation of inventory. AS3 cash flow statement. AS4 before Contingencies and events occurring after the balance sheet date. for acquiring balance sheet date. And AS5 net profit and loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. AS6 is removed. AS7 construction contract. AS8 is Removed. removed. AS9 is a Revenue recognition. okay. AS10 is property, plant and equipment. AS11 effect of changes in foreign exchange rate. AS12 is a government grants, accounting for government grants. AS13 for investment. AS14 for Amalgamations. amalgamation. AS15 for Employee benefits. employee benefits. AS16 for the borrowing cost. AS17 for Segment reporting. AS17 for segment reporting. AS18 for related party disclosures. AS19 for releases. AS20 for EPS earning per share. AS21 for consolidated financial statements. AS22 for accounting for taxes on incomes. AS23 for Investments in associates in consolidated financial statements. AS23 for investments in associates and
financial statements. AS24 for discontinuing operation. AS25 for AS25. Interim financial reporting. AS25 for interim financial reporting. AS26 for intangible assets. In mm, Okay, impairment loss. AS26 for impairment loss. AS27 for AS26 is for intangible assets. AS27 is for financial reporting of interest in joint venture. AS28 is impairment of assets. AS29 is a contingency, contingency and provisions related. Provisions, contingent liabilities, and contingent assets. Balance sheet performance. Balance sheet performance, equity and liabilities. First, shareholders funds. In that, share capital, reserve and surplus, money receipts against share warrants. Second, share application, money pending allotment. Third, non-current liability, long-term borrowings, deferred tax liability, other long-term liabilities, long-term provisions. Fourth, current liabilities, short-term borrowings, other current liabilities, trade payables, short-term provisions. Assets, non-current assets, uh, property plant, Property, plant. Mm. capital work in progress, intangible assets under, Intangible assets. okay, tangible Property, assets, plant and equipment, intangible assets, capital WIP, intangible assets under development. tangible assets, then B, non-current investments, C, deferred tax assets, D, long-term loans and advances, E, other non-current assets. Second, current assets, in that current investments, trade receivables, inventories, cash and cash equivalent, other current assets, and short-term loans and advances. Now, P&L performer, in that revenue from operations, other income, total revenue, then expenses, in expenses, cost of material consumed, purchase of stocks in trade, finished goods, work in progress, stock in trade, then employee benefits expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, other expenses, total expenses, then profit before exceptional and extraordinary items and tax. Then exceptional item profit पूरा before. हर्षल पूरा रीड करके बोला हुआ है बेटा पूरा। और हमारा प्रोफार्मा इतना है ही नहीं एक्सेप्शनल आइटम एंड ऑल। हाँ सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है। टैक्स और ये, और जो मेरा इतना ही बोलना है कि हियर यू आर टेकिंग रिविजन्स। तो जब हम लोग रिविजन्स करते हैं तो रिवीजन ये हमेशा बिना देखे करनी चाहिए हर्षल। ठीक है, अभी आप पहली बार आए इसलिए मुझे अच्छा लगा, आई वांट टू मोटिवेट यू। Sir, पर first time. थोड़ा, हाँ थोड़ा प्रिपरेशंस, ये तो चीटिंग हुआ मतलब सीधा सीधा। आप जो देख के बोल रहे हो, मतलब आपको देख के बोलना है तो अभी इतने दिनों के बाद उसमें मजा नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट कि जितना भी होता है एटलीस्ट आपने हैंड रेस किया। नेक्स्ट टाइम बिना देखे कोशिश कीजिए, बिना देखे बोलने की। दो चार बार गलत हो जाओगे तो एक दिन गलत हो गए, दो दिन गलत हो गए, तीन दिन गलत हो गए, पर गिव अप मत करो। ठीक है, चौथे दिन तो आपका बराबर, अभी ये कॉन्फिडेंस विजुअल का जो बढ़ा हुआ है ये भी सेम आंसर्स दे दे के बढ़ा हुआ है। फर्स्ट 2 डेज में तो डिफिकल्टी था उसके लिए भी। तो Yeah, sir. Sure. आपने आज मुझे जो बुरा इस बात का लगा कि ठीक है, आप उल्टा मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके अच्छे लगे। इफ यू आस्क मी, बैलेंस शीट और पी एंड एल तो आपने सीधा रट्टा मार के नहीं बताया, चीटिंग करके बताया वहां पे। नहीं भी आया होता तो विजुअल ने हैंड आपको वो हेल्प कर दिया रहता हर एक इसमें। Yes, ठीक है, sir. देखा था तो मैंने. ये आज आपको क्या लग रहा है आपकी गलती है, आप मुझे बताओ। मेरी गलती है फर्स्ट कि मैंने देख के बताया बैलेंस अकाउंट P&L, जो मैंने रिवीजन की बैच थी इसलिए मैंने रिवीजन करके बताना चाहिए था. हाँ, दिस इज माय और फर्स्ट. दूसरी दूसरी गलती ये थी कि आपने हैंड रेस किया है पर आपके प्रिपरेशंस कुछ नहीं दिख रहे प्रॉपर, एटलीस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। पी एंड बैलेंस शीट तो अभी तक अपन ने देखा ही नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एस के नाम तो याद हो ही जाने चाहिए इतने दिनों में। तो हाँ, तो वो एस के नाम नहीं याद हो रहे। आप सोचो आपको अंदर का भी याद करना है। आपकी बुक कंप्लीट है पूरा? ये सर कंसल्ट बुक कंप्लीट है अब जो AS12 हुआ था अपना.
8 डे में। आपने ज्वाइन अब भी किया है क्या, बहुत लेट? नहीं मतलब मेरे जो एग्जाम थे ना, तो मेरे बैकलॉग्स थे, तो मैंने वो क्लियर किए पहले, देन मैंने अभी ज्वाइन किया हूँ फॉर द आप कंसोलिडेटेड। फाउंडेशन पास हो या डायरेक्ट एंट्री हो? सर मैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। पर प्रिपरेशंस अच्छे रखो, स्ट्रांग रखो। अपने को एग्जाम्शन चाहिए है पेपर में। और आप देख सकते हो आज का कंसोलिडेशन और एमलगमेशन का क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इजी। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे स्टडी मैथ्स से। यस सर। ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर दीजिए। मैं भी करूँगा सर। हाँ हाँ। ओके। Yes, I shall. Better you can attend from today. Today is a consolidation का first day, so you can attend it in live. Don't worry, you will understand it. All consolidation questions, though you are recorded student. Okay. Okay. एक ही मिनिट हा. तो अमॅलगमेशनचा जो क्वेश्चन होता ना एक्झामला आलेला, तो स्टडी मॅथचा कुठला आहे सांग ना मला. तू नाही का त्या दिवशी अमॅलगमेशनचा जो क्वेश्चन आहे एक्झामला आलेला, तू तिकडनंच तर दिलास ना त्याला. स्टडी मॅथ मध्ये आहे ना तो क्वेश्चन तसंच. चेक कर ना. चलो. So today's chapter, consolidated financial statement, one of the important chapter from exam point of view. So consolidation process, first I'm not going to explain you theory of this. I will I will give you some examples, and after that you can easily understand these examples, question theory part. So in consolidation, what is important? When consolidation process is applicable. So, but obvious consolidation, if I have investment in some company, assume I am having 10% shares of A company, A Limited. So 10% shares of A Limited is 13 will be applicable for me. Why? Because it's just an investment in any company. So I will do accounting as investment in equity shares as per as 13. Dividend, I will record it as income. If dividend is pre-acquisition dividend, I will deduct it from investment. I already explained you in S13. If I sold some shares, weighted average method will be applicable over there. Then S13 weighted average applicable. Bonus shares are there. It is a free of cost. Right shares are there. I have two options. I will sell that renouncement of the right, and second one is I can purchase that right shares. So S13 is very simple. When to apply S13? When you have just an investment, you do not have any interest in their working. You are not in the board for taking any decision. You are not controlling any entity. You are just investing it and taking a benefit of dividend. I'm talking about investment in equity shares. If suppose if I'm having investment more than 50%, assume I'm having investment of 55% in any company.
assume in B Limited. So I will apply S21. Reason is very simple, because S13 principles is just to get dividend, but S21 principles are different. And how S21 will record your investment, that we are going to understand in S21. And if I am having 40% in C Limited, so I will apply S23 from 20% to 50% for that investment. Significant influence word is there. What is the difference between control and significant influence? Control means all decisions of that company. Means, for example, Sanket sir is having investment in B Limited. So all decisions of that company is taken by me, because I'm controlling that company. And when I'm giving suggestions, but due to my suggestions, they get influence, it is called as S23. If you ask me what is the difference between two, I have control on my son, that is Daksh. So control means whatever activities he is doing, it is only after consent of Sanket sir. So that is called as consent. And on visual, I'm only having influence, but I cannot control all his activities. So that is the difference between control and significant influence. Ultimately, decisions are taken by visual, and I'm only giving directions. He wants to follow, he can. If he does not want to follow, he will take that decision. So that is called as S21 versus S23. Friends, in consolidated financial statements, when we apply consolidated financial statement, assume here I am having a company of holding company, or you can call it as parent company, and second one is a subsidiary company, is S Limited. Every standard has different technique of recording investment. So now holding company standalone balance sheet. Standalone balance sheet is H Limited. What it has? Equity share capital, or might be preference share capital. Then reserves and surplus is there. Liabilities are there. Assets are there. And investment in S Limited is also there. Investment in S Limited. Here, equity share capital, reserves and surplus, liabilities, and assets. The consolidation process is very simple. If I do consolidation, what I have to do? I will take equity share capital of holding plus subsidiary. I will take reserves and surplus of holding plus subsidiary. I will take liabilities of holding plus subsidiary. Assets of holding plus subsidiary, and investment. Simple a process of consolidation. If this is a process, then this standard is not applicable. Why there is a need of this standard if process is very simple? So this is not the correct process. Now what is the correct process? Let's understand it. I will give you an example, then it will be easy for you. You have to understand how your balance sheet is going to look like. तो आपको यही समझ के लेना है कि आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखने वाली है आफ्टर कंसोलिडेशन. इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है भाई. ये क्या है सर? होल्डिंग होल्डिंग सब्सिडी ऐड कर दिया, रिजर्व सरप्लस ऐड कर दिया, सब मतलब बैलेंस शीट आपने कंबाइन कर दी. कौन सी बड़ी बात की? तो इसके लिए क्या कंसोलिडेशन लगेगा क्या? इतना इजी होता तो 8 दिन का लेक्चर थोड़ी देता था. 8 days है मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है. इतना इजी नहीं है. प्रोसेस को समझ के लेना है. हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस S21. सो
Now, what is the process? First, understand it. This is very important. If you understand these basics, this accounting standard is very, very easy for you. Okay. So let's understand what is the consolidated process. When I taught this chapter in my life, it was for CS executive. Then I have taken this batch for CA final in something in 2012-13, but there were many difficult questions in consolidation because holding company has investment in subsidiary, might be subsidiary companies also having investment in the holding company. There is a cross holding, there is chain acquisition, holding companies having subsidiary company investment, subsidiary companies having subsidiary to company investment, and process was very difficult. Now, thanks to Companies Act, as per Companies Act, holding company can hold shares in the subsidiary, but not vice versa. So our cross holding questions are removed. Chain holding you don't have in your syllabus. That holding is having in subsidiary 1 and subsidiary is having in subsidiary 2 investment. So such type of questions are not there. Otherwise, consolidation, I solved more than 100 questions in CA final. But now, if you solve only 30-40 questions, it will be sufficient. So at your age, or what I can say in your syllabus, questions are not very difficult, but still students are not aware about the concept, and therefore they are finding this chapter very difficult. And where normally students are getting wrong, bifurcation of this resource and surplus of subsidiary is between pre-acquisition and post-acquisition. And this process, if you get fail, your whole question will go wrong. Your whole answer will go wrong. Okay. So friends, whenever you are doing practice, focus on analysis of profit of subsidiary company. So most important point in this chapter is analysis of profit of which company? Subsidiary company. ओके तो मेरे टाइम पे जब भी हम लोग करते थे तो मुझे याद है कंसोलिडेशन वहां पे 5 चैप्टर्स थे सी फाइनल में और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 100% आने वाला था एमलगमेशन का क्वेश्चन 100% आने वाला था बिलीव में आपके जितना सिलेबस नहीं था जितना आपको सीए इंटर में है अभी मेरा फाइनल का सिलेबस भी इतना ज्यादा नहीं था बट फाइनल का लेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन इतना सिंपल नहीं होता था बहुत डिफिकल्ट होता था होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में होगी पर उल्टा भी होता था सब्सिडरी का होल्डिंग में सब्सिडरी होल्डिंग का सब्सिडरी 1 में सब्सिडरी 1 का इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी 2 में तो चेन होल्डिंग भी होता था और बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी पर अभी ये चैप्टर ड्यू टू कंपनीज एक्ट 2013 बहुत इजी हो गया है क्योंकि क्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं है होल्डिंग सिर्फ सब्सिडरी में करेगा पर सब्सिडरी होल्डिंग में नहीं करेगा ये ध्यान में रखिए तो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी उसका जो एनालिसिस है प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन नाम सुन लो सिर्फ अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस ये जो होता है वो डिवाइड कैसे करना है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में यही प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी बाकी ये प्रोसेस बिल्कुल भी सिंपल प्रोसेस है ये ध्यान में रखिए कंसोलिडेशन ये कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है ये ध्यान में रखिए तो पूरा फोकस रखना लास्ट तक ओके क्योंकि ये 8 दिन आपने कितने आई थिंक 7-8 लेक्चर्स रहेंगे शायद से तो ये लेक्चर्स में S23 भी कवर करना है S27 भी कवर करना है और कंसोलिडेशन अपने को 5 दिन में कवर करना है 8 लेक्चर से ओके तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो समझने की कोशिश करना हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है 9-9:20 तक मैं यहाँ पे आपको पूरा अभी आज से थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे बीच में मैं 15 मिनट का जब ब्रेक दे दूंगा आपको तो वो लिखने के लिए दूंगा और आज से थोड़ा सा ऐसा डायरेक्टली ये नहीं दूंगा मैं आपको 9:20 को लिखने के लिए वापस से टाइम दूंगा ठीक है तो स्टूडेंट्स
इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अभी प्रोसेस जो है, नाउ आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओवर, तो आई नीड टाइम टू टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस इन द क्लास. And from today, whatever writing part is there, you please finish it at home, okay? Because we have to solve maximum questions. Now only three questions are only, three topics are remaining. So I need your support. I'm not going to take it now in class. You have to write it at home and please do maximum questions of consolidation with me. So it will help you for your एग्जाम क्वेश्चंस. तो अपने को टाइम भी मिलेगा एग्जाम क्वेश्चंस के लिए. एंड यू विल नीड, यस, डेली 2 to 3 hours यू हैव टू डिवोट फॉर कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन के टाइम पे इतना याद रखो, 2 से 3 घंटे ये अपने को देना ही है नेक्स्ट वीक और ये वीक, एवरी वन ऑफ यू. एंड 1 hour ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. संडे को यू डू रिविजन्स, ओके? तो अभी एक प्रोसेस इज वेरी सिंपल. क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लो एंड घर पे पढ़ाई करो. अभी आज से बिल्कुल भी हल्के में मत लो, बिकॉज ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का सिलेबस है पेंडिंग. 30 मार्क्स तो पकड़ के चलो, 30 to 40 मार्क्स का सिलेबस अभी भी पेंडिंग है. तो बहुत अच्छे से करना, एक भी नोट पेंडिंग मत रखने देना, ओके? और जो भी पेंडिंग होगा एक बुक में लिख के रखो, तो वेन एवर यू विल गेट टाइम उसको टिक करो, ओके? प्लीज डू सिंसियर वर्क. एक सिंसियरिटी से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है, ये ध्यान में रखो. चलो, सो इन कंसोलिडेशन नाउ process we have to understand. Now understand equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा, सब्सिडरी कंपनी का नहीं आएगा. यू वोंट कंसिडर सब्सिडरी कंपनीज इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल कंसिडर ओनली holding company share capital, okay? So process understood. So equity share capital in consolidation, whether there will be equity share capital of subsidiary company in consolidated balance sheet. Acha, Aishal is asking me standalone balance sheet. Standalone means what, beta? अकेला इंडिविजुअल बैलेंस शीट. इंडिविजुअल बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड का इंडिविजुअल बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन बैलेंस शीट. गॉट बेटा? गॉट द कॉन्सेप्ट आइशल? तो ये ध्यान में रखिए, स्टैंड अलोन. एंड कंसोलिडेशन में वी आर गोइंग टू कंसिडर होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, दोनों को बोलते हैं कंसोलिडेट होना, ओके? ठीक है. सिंपल भाषा में स्टैंड अलोन बैलेंस शीट इज बिफोर मैरिज, कंसोलिडेशन इज आफ्टर मैरिज, ओके? ठीक है. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी, plus reserves and surplus are divided in two parts, pre and post. Reserves and surplus are divided in two parts of subsidiary company, okay? So share in, not only post acquisition profit, holding का share in post acquisition. Got the concept? Share in post acquisition, okay? So share in post acquisition we are going to consider over here. ठीक है? So what about now pre part remaining? Yes. So here there is minority interest. Minority interest means what? 55% I am having share. So here I will take only 55% of post acquisition. So minority is 45%. 55% होल्डिंग का शेयर है सब्सिडरी में. तो बचा हुआ सब्सिडरी में किसका है? माइनॉरिटी का. तो माइनॉरिटी अपने एग्जांपल में कितना हुआ? इन आवर एग्जांपल 45%. It might be 60-40, it might be 70-30, it might be 90-10, it might be 95-5, it might be 99-1. Okay. तो minority is out of 100,
How much by holding? Holding must be having more than 50%. Then only consolidation is there. More than 50%. And remaining is minority. Got the concept? अरे इजी है क्या? ओके, तो माइनॉरिटी में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री प्लस पोस्ट. ओके, प्लस प्री प्लस पोस्ट. इजी. तो 55% अभी भी बाकी है इक्विटी शेयर कैपिटल का. इक्विटी शेयर कैपिटल का 45% वी हैव कंसिडर इन माइनॉरिटी. प्री का 55% इज स्टिल over there. Post 55% is already considered here, and 45% consider pre and post in minority interest. So pending क्या क्या है? Pending, you only tell me. Pending क्या क्या है अभी भी? Pending is equity share capital का 55%, pre acquisition का 55%. And what is not pending? Post 55% over and 45% सबका हो गया. Okay? Till now any difficulty? Not at all, sir. Not at all. Liability, yes. Now liability को holding plus subsidiary. हाँ, liability में you will take both holding plus subsidiary. Easy. Assets में you will take holding plus subsidiary, both. And investment is getting knock off. Investment किसके साथ knock off होगा? With equity share capital and pre-acquisition profit. यदि equity share capital and pre-acquisition profit is greater as compared to investment, तो it has a credit balance. तो difference लेना है. if difference में equity share capital and pre-acquisition profit is greater because it has a credit balance, so we will record it in the capital reserve. We will record it as capital reserve. And if investment is greater, investment greater means debit balance is greater, so we will record it as goodwill. Okay. So are you going to consider investment? No, sir. Are you going to consider equity share capital का 55%? No, sir. Are you going to consider pre-acquisition profit in the balance sheet? No. We will knock off it and we will take only difference of it. तो difference क्या आ सकता है? Difference might be goodwill or difference might be capital reserve. और capital reserve होगा तो where to show it? Under reserves and surplus. Okay. So process is very simple. This is a process. If you understand this, consolidation is over. Okay. Now what is difficulty? Difficulty is that what is pre-acquisition profit and post-acquisition profit, and bifurcation of this is one of the challenge. Okay. Knock off करना मतलब investment ना दिखा के ना इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाओगे ना रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? दोनों का डिफरेंस दिखाओगे. डेबिट बैलेंस यदि ज्यादा होगा गुडविल बताओगे और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो कैपिटल रिजर्व बताओगे. तो ये दोनों होता है डिफरेंस. तो कौन चला गया? इन्वेस्टमेंट चला गया. ओके. इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 55% चला गया, 45% तो माइनॉरिटी रख रहा है. रिजर्व एंड सरप्लस प्री एक्विजिशन चला गया, पोस्ट एक्विजिशन वो तो ऐड कर दिया 55%, और 45% के बारे में क्या है वो उसके बदले में माइनॉरिटी दिखेगा. तो ये होती है कंसोलिडेशन की प्रोसेस. इजी चे? अंडरस्टूड? वॉट एवर इज देयर ऑन स्क्रीन लिखो फटाफट. यस. सो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट वो भी लिख लो and try to understand this process. Once you got it, write down over or raise your hand, and please without looking into this write it on. And where you will write is in on your फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्सेप्ट बुक. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखो. कॉन्सेप्ट बुक में ये एग्जाम्पल लिखो एंड ट्राई टू रिकॉल इट वन मोर टाइम. ओके. एंड इन माय एग्जाम्पल 55%. तो ए होल्डिंग कंपनी is Sanket sir and B limited is the consolidation. 55% is my example. 45% is minority. And after writing it, raise your hand. Concept book में लिखो and one more time in your normal, yes, revision on the pages.
रफ पेजेस पे भी लिखो, चलो फटाफट। ट्राई टू रिकॉल इट बाय योर ओन, खुद से याद करने की कोशिश करो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब लिखने को इजी जाएगा। ओवर, सेव फेस का स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर एंड पेंडिंग जो है इन्वेस्टमेंट वर्सेस ये डिफरेंस, यस, 3 स्क्रीनशॉट्स। अच्छे से लिखो, याद करो। दिस इज द फर्स्ट सेशन where you can easily understand what is the consolidation process is. So it is not only simply adding your balance sheet, but we have to understand what is to be knock off and what you have to write it in the consolidation balance sheet. Equity share capital किसका होगा? Only holding company. Resource and surplus holding company, but post acquisition का share that is 55%. Minority interest is there 45%. Capital में होगा, pre acquisition में होगा, post acquisition में होगा, सब में होगा। Liability होल्डिंग की भी आएगी, सब्सिडरी की भी आएगी। एसेट होल्डिंग की आएगी, सब्सिडरी भी आएगी। पर क्या नॉक ऑफ हो जाएगा? नॉक ऑफ हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नॉक ऑफ होगा, प्री एक्विजिशन का 55% और इक्विटी शेयर कैपिटल का 55%, ये नॉक ऑफ होगा। बचा हुआ 45% माइनॉरिटी में जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है। पोस्ट एक्विजिशन बैलेंस शीट में दिखेगा 55%, तो प्री एक्विजिशन और इक्विटी शेयर कैपिटल का 55% इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नॉक ऑफ होके, यदि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल दिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व दिखेगा। सिंपल प्रोसेस। कॉन्सेप्ट बुक में लिखो अच्छे से, and after writing it, write on rough pages also one more time as a self revision, and then tell me over, 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 over। चलो जल्दी करो, फटाफट। Minimum 2 3 students will explain me this concept, huh? Consolidation process, then we will go ahead।
Yes, sir. Good morning, sir. So we can't hear you. You are on mute. Explain me the process. Yes, sir. So in consolidated financial statements, first equity share capital we will take the holding companies, and reserves and surplus we will take the holding companies, and share of holding company in post acquisition Very good. reserves and surplus of subsidy company. Hmm. And liability we will take holding plus subsidy. Assets will be holding plus subsidy. The pending things are equity share of 55%, and pre-acquisition part of 55%. Hmm. This will be knocked off with investment. The difference, if it has a debit balance, it will be goodwill. If it is credit balance, then capital reserve. And what about minority interest? You forgot that. Oh, sorry. Minority interest of 45%. There will take equity share capital pre and post. Very good. Today's consolidation, so we are having good audience. चलो विशाखा बोलो बेटा. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. बोलिए. In consolidation, we will take equity share capital of holding, assets of holding and subsidiary both, liabilities of holding and subsidiary both, reserves and surplus of holding and share in acquisition and subsidiary पोस्ट company, एक्विजिशन. share in post acquisition of subsidiary company. हम्म. And minority interest, we will take 45% of equity share capital pre and post acquisition. हाँ. एंड Then remaining part is equity share capital का 55% and pre-acquisition का 55%. That will be knocked off against investments in ओके. subsidiary company. If the हाँ. balance is debit, we will take goodwill. If the balance is credit, we will take credit reserve, capital reserve. वेरी गुड. चलो नाउ we are here to understand working notes. So everyone, please do not write working notes now. I will give you screenshots in concept book. You have to write it properly. So please first try to understand this. You can write it on rough pages. Okay, so 2 times you will do by your own and 1 time with me, so it will be easy for you. Chalo. So yes, working notes are very important. These working notes are the heart of this chapter. If you have correct working notes, then this chapter is very simple. So first working note is, write down shareholding pattern. What is the first working note? Shareholding pattern. I will take S limited number of shares held by, out of S limited held by H limited. So number of shares of S limited, I will take out of that how many shares H limited is having and how much is by minority. So this answer is in percentage. So this is your working note 1, shareholding pattern. I already told you working note 2, whose analysis is very important. Subsidiaries company profit analysis is very important. So analysis of profit of S limited. S limited means subsidiary company. So analysis of profit of S limited. For that, I will open 2 accounts. I will open general reserve account and P&L account. And then I will do this analysis, serial number, particulars, pre-acquisition profit and post-acquisition profit. But pre-acquisition profit will be having only
one column, but post acquisition will have two columns. One is general reserve, one is P&L. One is general reserve and one is P&L. Some people may call it as capital profit, different names. Some might call it as revenue profit. General reserve, they may call it as revenue reserve, and P&L, they may call it as revenue profit. So different names are there. In many books you can see these words: pre-acquisition, instead of that capital profit; post-acquisition, instead of that revenue. And revenue are divided in two parts: revenue reserve, that is general reserve; revenue profit means P&L. Remember, after doing this analysis, we will calculate first total, and total will be divided minority interest, in my example 45%, and holding share, in my example 55%. Minority interest, we will transfer it to working note 4, and holding share, pre-acquisition is going to knock off with investment, so working note 3, and post-acquisition we are going to add it, so this is working note 5 in reserves and surplus of holding company. So minority interest, working note 4 is there. For knockoff, working note 3 against investment, and post acquisition we will consider it in the reserves and surplus of holding company, so we will add it in working note 5. So this is the bifurcation. This is very important. Once you got this chapter is nothing, is very simple. So first, we will divide our S Limited profit in two parts: pre-acquisition and post-acquisition. Post-acquisition, again we have to divide general reserve and P&L. Pre-acquisition, no need to divide it. Pre-acquisition is also called as capital profit. Post-acquisition is revenue word. General reserve is revenue profit, and P&L is also called as revenue profit. So these words are commonly used. You can use any word, whatever you are thinking easy for you. And after that, total you will take, you will do this bifurcation, total, but minority interest you will keep it in the working note 4, and holding company you will keep it in the working note 3. Working note 3 is cost of control. Cost of control. Serial number. This is goodwill or capital reserve calculation. Particulars. Computation. Rupees. So which items are going to knock off? Investment. So A, cost of investment. Where you will get cost of investment? Normally from balance sheet. Given. Less, very important. As per AS13, the same concept. If you are getting dividend out of pre-acquisition profit, to whom it is getting? To holding company. If dividend is received out of pre-acquisition profit, that will be deducted. Same principle is there in AS13. I'm going to explain you this principle. Don't worry if you have not studied AS13. Dividend out of pre-acquisition profit, we are going to reduce it minus. So this is subtotal A, and it is getting knock off against share in subsidiaries company, net assets of subsidiary company, share in net assets of S Limited. So which net asset? Number one,
share capital 55% into equity share capital of S Limited, and Roman 2 pre-acquisition profit, that is capital profit, which you calculate from working note number 2. Here it is working note 3, and here we are getting it from working note 2. So this is called as subtotal B. And if answer is positive, it is goodwill. If answer is negative, capital reserve A minus B. Correct? Over. So this is your working note 3, cost of control. Cost of investment is dividend out of pre-acquisition profit. Subtotal A, B, share in net assets of S Limited, share capital, pre-acquisition profit, subtotal B, and goodwill or capital reserve. It will take time, don't worry. But same format we are going to apply in every question. Working note 4, minority interest. Now minority interest is in share capital, particular serial number, particulars rupees. Serial number, particulars rupees. You will have it in share capital, pre-acquisition 45%. So this is only 45%. And in post-acquisition, general reserve and P&L in post-acquisition. Take a total. And working note 5, general reserve and P&L of holding company, because subsidiary company is already over. Now holding company. So serial number, particulars, general reserve, P&L, balance as per balance sheet, balance as per balance sheet. And number 2, post-acquisition, share in post-acquisition profit. Share in that 55% post-acquisition profit. Working note 2 से आएगा. From where you will get this? From working note 2. And then you will take a total. Read it carefully. Do it for minimum 2-3 times. Write down this for 2-3 times and solve this. Speak loudly working notes and give me a revision. It will be easy for you. Chalo, take a screenshot. Those who have not completed. Working note 1, shareholding pattern. If you understand these working notes, this chapter is very simple. Working note 2, serial number, particular, pre-acquisition, post-acquisition, also called as capital profit, revenue reserve, revenue profit, post-acquisition revenue, minority interest, H limited 55%. Cost of control is there. Serial number, particulars, competition rupees. Investment is getting knock off. Same logic, but in the form of working notes. Goodwill, capital reserve. Working note 4 is minority interest. Very simple. And working note 5 is general reserve P&L of holding company. अरे हाँ देऊन टाक हो लगेच 5 मिनिट. चलो विजुअल इजी है बेटा. हाँ सर, इजी है. पूरा समझ में आ गया. हाँ सर, अभी समझ तो आ गया, बस लर्न करना है. लर्न तो करना पड़ेगा. यस. हम्म. चलो याद यस. करो. आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स. ठीक है, लिखो 2-3 बार लिखो और याद करो और मुझे रिवीजन दो. ओके. ओके सर. चलो स्टार्ट.
Ready formats? New students, try to answer. Chalo. Kamal? Yes, beta. Fast. Working note number 1, shareholding pattern, subsidiary company and hold by holding company percentage or minority interest percentage. Working note number 2, analysis of profit of subsidiary company. इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक जर्नल रिजर्व, एक P&L. और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भूल गए, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा हाँ, अकाउंट अकाउंट, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद कॉलम्स। यस बेटा, यू आर करेक्ट। कमल कहाँ गायब हो गए आप? संतोष जी कंटिन्यू कीजिए आगे। हेलो हाँ बोले। जी सर। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न एस हो लिमिटेड गया, या वर्किंग नोट 2 को आगे कंटिन्यू कीजिए, जो आगे वो बोल रही थी, सीरियल वर्किंग नंबर पर्टिकुलर्स। ओके। सीरियल नंबर पार्टिकुलर, pre-acquisition profit, post-acquisition profit, and there are two parts of post-acquisition profit: general reserve and P&L. Pre-acquisition profit is known as capital reserve. Post-acquisition profit is known as revenue. General reserve is known as revenue reserve, and P&L known as देख revenue के बोल रहे profit. बेटा आप? नहीं नहीं, No नोटबुक sir, बंद कीजिए, जो भी याद आएगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ चलो। and then we have to make working note for minor थ्री 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 तो भूल interest गए। and ठीक है, एक बार वापस तैयारी कीजिए। यस, एसकेएनएम वर्किंग नोट 3। In working note number 3, we calculate cost of control. At first, we have to prepare 4 column. In first column, serial number, then particular, then computation and amount. In number A, cost of investment less the dividend in pre-acquisition profit. Dividend out of pre-acquisition profit. Okay, no problem. Dividend out of pre-acquisition profit. One more time. Dividend. At first, we take cost of investment. And then we have to deduct it. Dividend out of from cost of investment, we have to deduct dividend out of pre-acquisition profit. Then we have to subtotal it. Then B number, share in net asset of subsidiary company S Limited. In our situation, S Limited. Share cap in this first share capital 55% plus equity share capital of S Ltd. Means subsidiary company 55% and equity share capital S Ltd. Then pre-acquisition profit. Then we have to subtotal what we will get out of from A minus B deduct. Then we deduct A minus B. After that, if debit it shows debit balance, it will be If goodwill. positive answer goodwill, negative answer capital reserve. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Dividend in pre-acquisition profit of subsidiary या फिर ये holding? बताता हूँ। डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इतना ही। होल्डिंग को मिला है बाय सब्सिड फ्रॉम सब्सिडरी है वो, बताता हूँ वो, डोंट वरी। हाँ, नेक्स्ट। Working note number 4, we have to calculate minority interest. हाँ, At first, there are 3 columns. First column is serial number, then second column is particular, then amount. First, we have to take share capital. In share capital, we calculate pre-acquisition and general reserve and P&L, which are post-acquisition, which are calculated in working note number 2. Then we will get minority interest. Then we will go to working note number 5. We have to prepare. जनरल रिजर्व एंड P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। हाँ, Yes, sir. In this way, there are 4 columns to be prepared. First is serial number, then particulars, then goodwill. Sorry, general जनरल reserve. रिजर्व एंड P&L. Yes, sir. Balance as per balance sheet, and we have to add share in post acquisition profit, which are already calculated in working note number 2.
देख के बताया क्या? जी सर, ये वर्किंग नोट नंबर 5 में देख के बताया नहीं गया है। देखना ना बेटा, नहीं देखने का। मैं हूं ना आपको हेल्प करने के लिए। वाई यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ नोटबुक? नो। ठीक है, कोई सर बात नहीं। 5 लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड सो दैट नहीं नहीं, ठीक है ना, रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। नर्वस है। यस आदित्य। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट। सर फर्स्ट वन से स्टार्ट करना है क्या? हम्म वर्किंग नोट वन शेयर होल्डिंग पैटर्न हम्म सब्सिडरी लिमिटेड हम्म holding held by holding percentage and हम्म another one is minority interest percentage working out हम्म to analysis of profit of subsidiary limited इन हम्म सब्सिडरी लिमिटेड जनरल रिजर्व P&L आएगा। उसके बाद सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। इन प्री एक्विजिशन में आप कैपिटल देख के रिजेक्ट बता हुआ। रहे हो? नहीं सर, देख में नहीं बता रहा, वो बंद नोटबुक किया है बंद ऑलरेडी। रखो, नोटबुक बंद रखो। बंद हाँ बंद किया है सर, बंद हाँ किया। हाँ। पोस्ट एक्विजिशन में रेवेन्यू रिजर्व और रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। जनरल रिजर्व एंड इन P&L। मैंने ऐसे सर। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 45% है। वर्किंग नोट होल्डिंग हाँ अच्छा ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 45% और वर्किंग नोट 4 में होल्डिंग ये जो जाएगा। वर्किंग, और उसके बाद प्री होल्डिंग 55% है। उसके बाद प्री एक्विजिशन, उसके बाद वर्किंग नोट 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सीरियल नंबर पर्टिकुलर कंप्यूटेशन एंड रुपीस। उसके बाद cost of investment A portion, cost of investment minus dividend received out of pre-acquisition profit subtotal A calculation। उसके बाद B share in net asset, share capital first one, second one is capital profit as per pre-acquisition profit subtotal B। उसके बाद गुडविल और कैपिटल माइनस होगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, ये माइनस भी होगा, गुडविल आएगा प्रॉफिट। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग फॉर इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज। फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, सेकंड वन इज कैपिटल प्रॉफिट, थर्ड वन इज रेवेन्यू रिजर्व, फोर्थ वन इज रेवेन्यू प्रॉफिट। वर्किंग नोट 5 में जनरल एंड P&L as per holding बैलेंस company। शीट। ऐसे सर, serial number for general and P&L. First one is balance as per balance sheet. Second one is share in post acquisition profit. That's all sir. ओके ओवर। Okay बहुत sir, okay. बढ़िया। चलो विजुअल, लास्ट वन। Yes, sir. Good morning, sir. Sir, working note one shareholding pattern. A subsidiary limited held by a holding company in percentage or minority interest percentage. Second, working note two analysis of profit of subsidiary limited will be create two accounts: general reserve P&L, then serial number particulars, pre-acquisition profit, post-acquisition profit, में general reserve and P&L, and then we have total and minority. Then we have minority interest 45%. All will go in working note four. Then holding 55%, pre-acquisition will go in working note 3 and post will go in working note 5. Then we have working note 3, cost of control, serial number particular computation rupees, cost of investment, yes, with less dividend out of pre-acquisition profit, and then subtotal. Then we have share in net assets of subsidiary, उसमें हमारा आएगा share capital which is 55% of equity share capital, and then we have pre-acquisition profit, then we have subtotal। उसके बाद लास्ट में गुडविल और कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव आया तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आया तो A माइनस बी। देन क्या वर्किंग नोट 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 45% एंड आवर एग्जांपल serial number particulars rupees share capital pre-acquisition profit post-acquisition profit in which we have general reserve and P&L. Then working note 5 general reserve and P&L of holding company, serial number particulars general reserve P&L, first balance as per balance sheet, second share post-acquisition profit working note 2 2 से आएगा।
Very good. Okay, sir. Chalo. Now we'll start with actual example Yes, sir. illustrations. चलो हाँ चलो म्यूट कर दीजिए विजुअल. इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाइए. विराट, अनुष्का, आईपीएल सीजन भी चालू है. From the balance sheet and information given below, prepare consolidated balance sheet of Virat Limited and Anushka Limited. Virat Limited holds 8% in equity shares. So this is helpful in working note 1. लिखो वहां पे 80%, 20%. So 20% is minority, working note 1. How many equity shares are there? So there are 40,000 equity shares of Anushka Limited. 40,000 into 80%, 32,000. So 40,000 shares and 80% is 32,000. Now share capital बैलेंस शीट में जाएगा. शेयर कैपिटल अनुष्का लिमिटेड वर्किंग नोट 2 and 4. सॉरी वाई 2, 3 and 4. शेयर कैपिटल जाएगा 80% इन वर्किंग नोट 3. वर्किंग नोट 3 में कितना परसेंट जाएगा? 80%, 4, 20%. 1 lakh जनरल रिजर्व वर्किंग नोट 5 and this 1 lakh in working note 2. अनुष्का का वर्किंग नोट 2 में जाएगा. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बैलेंस शीट ऐड होके जाएगा. ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट will be added. Property, plant and equipment balance sheet add 3,20,000 share in Anushka Limited. Cost of investment working note 3 and with तीनों भी in balance sheet. So very simple question. See, I will give you presentation how to write it. I will give you, but for understanding purpose, we are going to prepare horizontal balance sheet, not vertical. But in exam, mandatory vertical balance sheet. Okay, exam में कैसे करना है? I will tell you. Don't worry. Balance sheet, equity share capital 6 lakhs. We are already having this pro forma. 6 lakhs लिख दिया. Then
4 lakhs, try to understand. Same pro forma, I am going to copy it, and you people beta, you will solve like this. First you will solve by your own and then we'll do it in fair. So 4 lakhs, where to write it in the pro forma? 80% into 4 lakh, 3,20,000, and minority interest 4 lakh into 20%, 80,000. Since it's incorporation, we are having these shares. So there is no pre-acquisition profit, because see, from day one, Virat Limited has shares in Anushka Limited. So Anushka Limited does not have any profit before Virat joins. Okay. देखो, विराट ज्वाइन होने के पहले अनुष्का को कोई प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि अनुष्का और विराट, जिस दिन अनुष्का बनी उसी दिन से विराट ने उसमें शेयर्स में पैसा डाल दिया। तो अनुष्का का कोई भी पास्ट नहीं था, पास्ट प्रॉफिट्स नहीं था। मैं प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूं। तो अनुष्का का कोई भी पास्ट प्रॉफिट्स नहीं था, ये ध्यान में रखिए। जो भी प्रॉफिट था वो विराट आने के बाद हुआ है। तो देर इज नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नो pre-acquisition profit. No pre-acquisition profit. Okay. Now reserves and surplus is there. So reserves and surplus of Virat. Virat ka 1 lakh, where we will write working note 5 in general reserve, because there is no P&L. P&L is 0. And Anushka ka 1 lakh balance as per balance sheet. Pre-acquisition 0, general reserve I am going to write 1 lakh, and here it is 0, because what general reserves and surplus, there is nothing in the profit and loss account, only general reserve. तो ये भी हो गया. Long term borrowings, next item. चलो line by line we have to go. Line by line, 6 lakhs, not according to working notes. We will write first working notes, we will finish it in the exam, and then line by line we will write it. So there is no question of not tallying it. So 2 lakhs plus 1 lakh. So in balance sheet, I am going to write 3 lakhs. तो बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3 lakhs. ट्रेड पेएबल 1 lakh plus 1 lakh, 2 lakhs. PPE 7 lakhs. But PPE we are having bifurcation. No, directly PPE. Non-current investment. Where to write non-current investment? Working note 3. I will write 3,20,000. 3,20,000 cost of investment. And in balance sheet, in exam you will write separate, but here I will take a total and directly I will write current assets. Directly I will add the current assets. 160 plus 200 plus 80 plus 140 plus 40 plus 60. So directly I will write 6,80,000. All this 6 totals. 6,80,000. Over. Now it's time to close your balance sheet. Working notes first, not balance sheet. So 40,000, we already know 80% and 20%. Okay, so working note 1, I am going to close. Yes, working note 1 done. This is 1 lakh. There is no pre-acquisition and there is no post-acquisition P&L. Out of that, minority interest is 20% and holding is 80%. 0, 0, 20,000, 80,000, 0, 0. As per my example, 20,000, 80,000. Okay, just understand. Minority interest, I will write it in working note 4. In front of general reserve, post 0, P&L 0. And share in post acquisition profit is 20,000, 80,000 here, 80,000 and 0.
Now I will close goodwill or capital reserve. 3,20,000 is investment. 3,20,000 is share in net asset. So goodwill or capital reserve will be 0. Minority interest 80,000 plus 20,000, 1 lakh. I will write it in balance sheet. Minority interest after reserves and surplus 1 lakh. And general reserve and P&L 1,80,000. Reserves and surplus 1,80,000. And my balance sheet is getting tallied. 600 plus 180 plus 100 plus 300 plus 200, 13,80,000 and 13,80,000. Yes. Over. Just put down figures in the balance sheet and working notes and you will get the answer. Understood? First question है, you will try by your own. On rough pages, balance sheet you prepare it in the horizontal format. Write down first working notes. Just put down all figures. Get tallied balance sheet. Let's check it with my answer. And then we will move to next question. And fair, we will do it in fair at home. I will tell you the technique, how to do it in fair. Okay. Fair कैसे करना है वो technique देता हूँ. But first you prepare every question. I will give it in this way. Then you prepare by your own. I will give you 10 to 12 minutes. No need to write all things. Okay. Just vertical pro forma. Horizontal pro forma. घर पे अच्छे से लिखो. घर पे अच्छे से लिखो फेयर में. थोड़ा फास्ट लिखा तो भी चलेगा. So all working notes I am giving you exactly 15 minutes. बहुत ज्यादा है 15 minutes. चलो write down 15 minutes. But everyone has to do this minimum 2 times. Every question minimum 2 times. One with me, just understand the question. 2 you solve here only by your own, and 3 do it in fair. बहुत easy है. Working notes में सिर्फ डालना है. Easy. नहीं समझा? I will help you out. Don't worry. एक बार आप खुद से सॉल्व करो. Put down it in working notes, and I will help you out. चलो start process. All working notes you have to write. All working notes on rough pages. चलो start writing. Do it. I'm here only. Raise your hand after writing this. Raise your hand.
Okay. I hope everyone has finished it. Over. Mark beta tallied. Yes, sir. Is it simple or difficult? Easy, sir. Easy. Yes, sir. So what are your working notes? Sir, first working note one, subsidiary company is hold by the holding company 80% and minority interest is 20%. Then analysis of profit of subsidiary company, serial numbers are balance sheet as per the general reserves. And here For it is your two balance carried down is 1 lakh. yes, sir. Okay. Yes, sir. So two balance carried down is 1 lakh here. Yes, sir. And buy balance brought down is also 1 lakh. Yes, sir. Or buy, or you can write like or it's okay that you will write instead of preparing general reserve and P&L, you directly write it in the वो ये वर्किंग नोट सर कॉलम में पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है, चलो एक काम करो बेटा, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर. एक बार देख लेते हैं पूरा पूरा मेरे साइड से भी चेक कर लेता हूँ. नथिंग इज रॉन्ग. एग्जाम में क्या करोगे? ओके, फर्स्ट यू विल प्रिपेयर दी बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा. क्या बनाओगी? बैलेंस शीट प्रो फॉर्मा इलस्ट्रेशन 12 से. विच क्वेश्चन? ठीक है, Yes, sir. 1 मिनट. एग्जाम में फर्स्ट बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा बनाओगी. ओके, जो मैं कलर कर रहा हूं ध्यान दे के सुनना. सेम पैटर्न यू डू अप्लाई इट एट होम. Yes, sir. सबसे पहले क्या करोगी? इन क्वेश्चन जो भी मैं कलर करके दे रहा हूं, यू राइट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड सब्सिडरी. उसके बाद सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट, रुपीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर ऑफ फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस. डोंट राइट एनी अमाउंट. Yes, sir. Then number 2, minority interest below reserves and surplus, working note 4. Non-current liability, only long-term borrowings. Then current liability, trade payable, assets, non-current assets, total लिखोगी. Yes, Don't write amounts. जितना कलर किया उतना ही. First you will prepare the pro forma. Okay, sir. Property, plant and equipment, current asset, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. Correct? Yes, sir. Then total. But don't write amounts. Notes to accounts below that, note 1, authorized, issued, subscribed and paid up capital. Note 2, reserves and surplus, only no, only pro forma 5 lines छोड़ दिए. Then you will write working note 1, shareholding pattern, 4-5 lines blank, analysis of profit, only general reserve account. Then serial number, particulars, only one column, revenue profit. Revenue profit के बदले में इधर लिख देता हूँ revenue reserve. Yes, sir. Revenue reserve. ठीक है? Then you will write cost of control. Say yes or no. Serial Yes, number, sir. particulars, competition rupees, cost of investment, less pre-acquisition dividend. Yes, sir. Sharing interest. And you can write over here capital profit or Pre-acquisition profit, sir. so instead of capital profit, you can write pre-acquisition profit. Subtotal, goodwill or capital reserve. Yes, sir. Minority interest, equity share capital, and instead of capital profit, you will write Acquisition profit. pre-acquisition profit. Both are correct. Yes, sir. And then only consolidated general reserve. Yes, sir. Sorry.
balance as per balance sheet and share in the profit of reserve and share. Post acquisition or reserve. share in Post acquisition profit, sir. post acquisition general reserve. Okay. Okay, sir. No need of this computation column. Yes, sir. General reserve. Correct? Yes, sir. And once you write this pro forma, then just fill in the blanks. Yes, sir. Change 12 number illustration. ठीक है? So whatever I have highlighted, you will write first that pro forma and then fill in the blanks. Yes, sir. Correct? हाँ, चलो Yes, sir. स्क्रीनशॉट 1 ले लो. Over, sir. इजी था बेटा? Yes, sir. Done, sir. तो एग्जाम में कैसे करना है समझ में आया ना आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो फॉर्मा लिख देंगे सर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. हाँ हाँ. डन सर. डन सर. डन सर. डन सर. How many screenshots? 6 sir. 6. Now we'll solve one of the difficult question. I will explain you this question. Okay. Yes sir. Illustration number 13. And what I am expecting from you, that you will do this question today itself. You will try to find out answer. I will explain you what is exactly. I will show you only working note 2. Remaining question I am expecting from you. Yes sir. Okay. So देखिए, आप ही बताना. From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary, prepare a consolidated balance sheet at that date having regard to the following. Reserves and profit and loss account stood at 25 S Limited. S Limited मतलब subsidiary company. तो Yes. reserve surplus of subsidiary company which working note बेटा? Subsidiary company working note 2 sir. Working note 2. So write down over there. Yes sir. Working note 2. Yes sir. When you acquire shares at that time, profit was 25,000. Yes, In sir. general reserve and P&L 15,000. So Yes, sir. this profit, Mahak, is Yes. earned by the S Limited before acquisition by H Limited, correct? Yes sir. So can I call it as pre-acquisition profit? Yes sir. Both are pre-acquisition. Can you write over there? Yes sir. तो हमने शेयर्स लेने के पहले का ही प्रॉफिट है ना बेटा ये तो. Yes sir. हाँ. And whenever you are doing consolidation, some assets might be revalued. कुछ assets क्या करते हैं हम लोग? Revalue sir. Revalue करते for consolidation purpose. Okay. So revaluation only for Consolidation purpose. Mhm. not for standalone balance sheet. Revaluation for consolidation and not for Stand alone. standalone. Standalone मतलब individual balance sheet. मतलब इसमें नहीं है. Yes sir. Okay. But किस में करेंगे? We will do it in Consolidation purpose. when we acquire shares on 1st April. So can I write it as date of acquisition? Yes sir. लिखो DOA, date of acquisition. Date of acquisition. Yes sir. On date of acquisition, what is your book value? 1,20,000 of machinery and furniture. Yes sir.
और वो रिवैल्यू कितने पे किया? 1,50,000 and 115,000. तो हियर इट इज अप बाय 50,000 एंड Sir, डाउन बाय down 5,000. 5,000 से डाउन हुआ. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन 10%. अच्छा, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में बुक वैल्यू या रिवैल्यूएड वैल्यू? Sir, book value हाँ, तो बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख. 1 lakh और फर्नीचर के लिए 20 lakh. 10% क्या हुआ? मशीनरी Yes, डेप्रिसिएशन. sir. तो चेक इट. 90,000 दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस, Sir, वेरी गुड. 1 लाख माइनस 10%. 10%. इट इज बुक वैल्यू. स्टैंड अलोन में Book value, sir. बुक वैल्यू. इन स्टैंड अलोन बुक वैल्यू, बट इन कंसोलिडेशन Revaluation value हाँ. और ये कितना था? 20,000 20,000, sir. It's a book value of furniture. फर्नीचर. और डेप्रिसिएशन कितना ईयर एंड पे? 15,000, 5,000 reduced, sir. 15%. 15%. डेप्रिसिएशन रेट बेटा, डेप्रिसिएशन रेट. Yes, sir. 15%. हाँ. सो दिस बैलेंस शीट इज आफ्टर 1 ईयर. Yes, sir. This balance sheet is after 1 year. Got the concept? Yes, sir. हाँ. But in consolidation, I am going to write Revaluation. रिवैल्यूएशन. कंसोलिडेशन में लिख के रखो. सीएफएस में हम लोग कितना लिखेंगे? इधर लिखो. सीएफएस ऑफ एस लिमिटेड में, Yes, सीएफएस sir. में एस लिमिटेड का कितना दिखेगा? Limited. 1 लाख का 1,50,000 किया ना, Yes, sir. 1,50,000 माइनस 10%. minus 10%. 1,05,000 ना? Yes, sir. One. नहीं, Yes. 1 लाख, नहीं, सॉरी, 1,35,000. 1,35,000. हाँ. और वो इसका कितना किया? 15,000. 15,000 minus 15%, sir. हाँ. तो ये कितना किया? सॉरी सर, उसका बुक वैल्यू सर तो 20,000 होगा ना सर? बुक वैल्यू नहीं, अभी रिवैल्यूड वैल्यू. ओके सर. कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में यस. कितना था? 15,000 ना. 15,000 माइनस 15%. यस सर. हाउ मच? 12,750. हाँ. करेक्ट है? अरे अंडरस्टूड या नॉट यस अंडरस्टूड? सर. यस सर. हाँ. अभी देखो 1 लाख का कितना हुआ बेटा? सर 50,000 इंक्रीज हुआ. हाँ. अभी ये 50,000 इंक्रीज, सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना जाएगा? 50,000 सर. हाँ. प्री एक्विजिशन में जाएगा 50,000. यस. करेक्ट. यस सर. अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना था? 10%. मतलब पर कितना? मशीन 5,000 सर. 50,000. 15,000 ना. 15,000. डेप्रिसिएशन ओके सर. हाँ. यस 50,000. सर. 150. हाँ. और ये कितना है? 10,000. तो 10,000. डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन कितना बढ़ गया? 5,000 सर. 5,000. तो 5,000 डेप्रिसिएशन पोस्ट में जाएगा. ओके सर. तो सी 1,50,000 का 1 लाख, 1 लाख का 1,50,000, 50,000 इंक्रीज विल बी इन प्री. सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट में बोल रहा हूं. 1 लाख का 1,50,000 you brought to 1,50,000 ना, so 50,000 you increased. तो one effect is in asset. Asset में हमने 150 लाया. And second effect 50,000 increase in the pre-acquisition. Understood? Yes, sir. And what is depreciation? 10,000. And now it is 15,000. तो 5,000 से depreciation increase. तो depreciation increase कहाँ पे जाएगा? Post acquisition, sir. Post में जाएगा. Because depreciation in post period. Depreciation हम लोग post period में किया. अभी you only tell me. Here 15,000 minus 15%. What is the depreciation into 15%? मतलब depreciation is 2,250. और इधर कितना था? 3,000. हाँ. तो depreciation and now revaluation. अभी revaluation कितना था? कितना हुआ revaluation? Sir, 3,000
नो नो नो, माइनस नॉट डेप्रिसिएशन, पहले अमाउंट बोलो। बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट था? बिफोर डेप्रिसिएशन सर 50,000 15,000 15,000 इज रिवैल्यूड अमाउंट, बुक वैल्यू। यस सर 20,000 हाँ, तो 20,000 का बुक वैल्यू यू डिक्रीज टू, डिक्रीज सर 15,000 तो 5,000 से डिक्रीज हुआ ना। यस सर हाँ, यू यस सर डिक्रीज बाय 5,000, डिक्रीज यस हुआ तो वो प्री में जाएगा। किधर जाएगा? प्री में प्री में। तो डिक्रीज प्री में जाएगा, माइनस, डिक्रीज मीन्स माइनस, एंड डेप्रिसिएशन आपका बचा या ज्यादा चार्ज करना है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज हाउ मच ऑन बुक वैल्यू? 3,000 सर 3,000, एंड नाउ यू वांट इट टू रिड्यूस सर 2250, मीन डेप्रिसिएशन रिड्यूस हुआ तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। सर हाँ, तो 3,000 माइनस 2250, तो पोस्ट में 750 इंक्रीज, यस सर बिकॉज डेप्रिसिएशन रिड्यूस मीन्स प्रॉफिट इंक्रीजेस। यस सर What I have done, see, standalone balance sheet में you will continue with 90,000 and 17,000. But in consolidation, are you going to continue with 90,000 and 17,000 or 1,50,000 and 15,000? 50,000 सर हाँ, तो 1 लाख का 1,50,000 हुआ तो 50,000 से सेकंड इफेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। एसेट में आपने 150 लिया, बट ओनली इंक्रीज एसेट, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होगा क्या कवर? नहीं सर So to give dual aspect concept, 1 lakh ka 1,50,000 means 50,000 increase. So that I will do it in pre-analysis. And what was my depreciation, previous depreciation? Post 5,000, 10,000 sir 10,000, and now it comes to 5,000 and 15,000. 15,000 हाँ, तो I want to increase depreciation. तो depreciation increase किया तो profit will decrease. So I will write post में minus में. yes sir Now what is my book value of furniture? 20,000 sir I want to bring it at 15,000 sir 5,000 से it will decrease in pre-period. pre-period yes, What was my depreciation on book value? 50 then sir 50% at 3,000 sir 3,000, and now I want it to, 2250 so I want to reduce depreciation. So depreciation reduce means profit increases profit increase 750 से profit increase होगा. Got the concept? yes sir So in post standalone balance sheet we will continue with, book value and in consolidation we will continue with revalued value sir now in exam, but we have to present this. yes sir एग्जाम में हमें ये प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 6 बनाएंगे इसकी. कौन सी बनाएंगे? वर्किंग नोट 6 हाँ, लेट्स चेक इट. वर्किंग नोट 6. हाँ, बुक वैल्यू कितनी थी? फॉर मशीनरी 1 लाख 1 lakh, furniture 20,000. Revalued figures 1,50,000 and 15,000. करेक्ट है? तो इंक्रीज बाय 50,000, डिक्रीज बाय 5,000. हाँ, तो ये कहां पे जाएगा? आई विल राइट दिस इन द प्री पीरियड. एंड व्हाट वाज माय डेप्रिसिएशन? मुझे एक्स्ट्रा कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा? 5,000 सर एंड 750. यस सर 750 से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. हाँ, यस सर 5,000 से प्रॉफिट घटेगा और 750 से प्रॉफिट बढ़ेगा. हाउ आई कैलकुलेटेड दिस? रोमन 2 into 10%. Roman 2 into 10% is 15,000, and already provided 10,000. yes sir Easy? yes sir So this working note you have to prepare it in exam. Easy है क्या working note? sir easy sir Yes. Now see. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था, IMP concept in this question. So what is IMP in this question? What is new? stand alone in a This is very standalone important. company. This is important. Second point. Yes sir So every question has some different points. yes sir Okay. Now what is my balance in reserves and surplus of S Limited? S Limited का reserve surplus check करो. What is the 1 lakh, balance? sir. 1 lakh. Sir. Out of that general reserve is? General reserve is sir 25,000 sir check करो ना जरा, बराबर देखो. On sir, screen. 70,000 sir 75,000 And in P&L? 2 lakhs sir for age limited अरे P&L देखो तो सही यार. S Limited only, not H Limited.
25,000 sir. हाँ चेक करो ना बेटा, ऐसा ये मत करो. सो वर्किंग नोट 2 में इफ आई राइट जनरल रिजर्व, Yes. व्हाट इज जनरल रिजर्व? टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस. Yes sir. हाँ, व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? Sir, 1 lakh sir. हाँ, Uh, Sorry sir. 75,000. Closing balance means balance sheet item. What is P and L balance? Sir, जल्दी 25. फटाफट बोलने का महक. P and L two balance carried down 25,000 sir. 25,000. Correct? Yes sir. When I acquired shares, at that time कितना balance था general reserve में? When H Limited acquired shares, I have already written. Reserves में कितना balance था? In first note, first में 20 देखो इधर. हाँ 25,000 sir. And हाँ, 15,000, by sir. balance brought down. 25,000 Hmm. and balance And brought down. Here हाँ, P&L 15,000 sir. P&L में 15,000. Hmm. Correct? Yes sir. Okay. Now you tell me, जनरल रिजर्व को बैलेंस कहां से मिलता है? जनरल रिजर्व, why it is increasing? Because balance is transferred from P&L. Say yes or no. Yes sir. So can I write number 1 पे by P&L Yes sir. 50,000 50,000. Yes sir. बैलेंसिंग फिगर? Yes sir. तो P&L के विच साइड पे? Sir, जनरल रिजर्व के क्रेडिट साइड में. तो P&L के डेबिट साइड में कैन आई राइट टू जनरल रिजर्व yes sir. 50,000. 50,000. Correct? Yes sir. And how much profit I earned during this period? 15 and 75. 75 plus 50. Sorry, 50 plus 25, 75 minus 15. Yes sir. 60. 60,000. Correct? Yes sir. Now very important analysis. So this general reserve you understood? Yes sir. So I'm not writing 75,000 and 25,000. Instead of that, I am writing 25 and 50. Now tell me, 25 is a pre, Yes sir. 50,000 is post, Yes sir. 15,000 is pre, Yes sir. 60,000 is post, Hmm. and 50,000 is also post. Post. Correct? Yes sir. सो शेयर्स लेने के पहले 25,000 और 15,000 प्रॉफिट था. शेयर्स लेने के बाद 50,000 प्रॉफिट हुआ, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया एंड हुआ प्रॉफिट 60,000. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes sir. सी, शेयर्स लेने के पहले ये बैलेंसेस थे. Hmm. शेयर्स लेने के बाद 60,000 प्रॉफिट कमाया और उसमें से Yes. जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 50,000 sir. हाँ, तो अभी इसका एनालिसिस करना है. अच्छा sir. सीरियल नंबर, particulars. This is Sanket sir technique, general reserve and P&L. This is not given in the study mat. Particulars, Pre-acquisition profit general reserve and P&L. and Okay. post. अभी general reserve से चालू कर. What is opening balance in general reserve? Sir, 25,000 sir. Where I will write this? For post acquisition under general reserve sir. Sir, Pre general लिखा है reserve. ना? Oh, Pre लिखा है ना yes, sir. सामने, pre. Yes sir. तो opening balance in general reserve is? 25,000 in pre sir. हाँ, तो credit side means positive, debit side means negative. Yes. Next, तो 25,000 over 50,000. Where to write 50,000? Post sir. Transfer Post. from P&L. Transfer from P&L. How much? P&L 50,000 sir. General reserve column में, because general reserve account is open. Yes. Correct? Yes sir. हाँ. Next, opening Yes. balance in P&L कितना है? 50,000 sir. Pre. 15,000 Pre. pre. Okay. Profit earned. Profit earned. Profit earned sir. Sir, post sir. Post 60,000. 60,000.
Profit during the year. Profit. In P&L, I will write Post 60,000. 60,000. Correct? Yes, sir. And transfer to general reserve. Transfer to general reserve. To general reserve, sir. कौन से Post, कॉलम sir. में? Post, sir. पोस्ट में, बट विच कॉलम, जनरल रिजर्व या P&L? P&L, sir. P&L. P&L और माइनस या प्लस? Sir, minus, sir. Debit माइनस. side. डेबिट साइड मीन्स माइनस. गॉट द Yes, कॉन्सेप्ट? sir. Yes, sir. So instead of writing 75 and 25, we are writing bifurcation, pre and Yes, sir. post. So this is Yes, sir. analysis of profit. Got the concept? Yes, sir. And after that, हमारा ये कितना आया था? Appreciation, Appreciation for machinery, sir. machinery and reduction. ये appreciation of machinery 50,000 up and 5,000 down means Yes, sir. appreciation is 45,000. 55,000. You can write separate. Yes, sir. ओके. एप्रिसिएशन और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन यू कैन राइट लाइक दिस. व्हाट यू विल राइट हियर? Yes, sir. रिवैल्यूएशन Valuation. एंड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना था? -5,000 प्लस 750. Yes, sir. तो 750 माइनस 5,000 कितना हुआ? 4250. पर पोस्ट में से माइनस करेंगे. Yes, sir. 4 to 5, sir. किधर से माइनस करेंगे? Post में से minus, sir. यस. एंड देन वी विल डू दिस टोटल. और टोटल में से yes, this analysis is very important. बस बाकी same है question. But Yes, what sir. is important in this question is Analysis. analysis of profit. Easy था या difficult था? Easy, sir. After explanation, easy. Okay. So थोड़ा सा घर पे analysis कीजिए. Do it Yes, sir. properly. I'm not going to give you spoon feeding. Everything you Yes. have to write by your own. Rough में करो solve. Okay. Do not do it in fair. And we will check it on Wednesday. Finished. ठीक है. तो कौन सा एनालिसिस करना? वर्किंग नोट नंबर 2. 2. तो वर्किंग नोट 2 जो है ये देखिए एक बार. Yes, sir. वर्किंग नोट 2 लिख के देता हूं आपको. हाँ जी. तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर जाएगा? General reserve, sir. हाँ, जनरल रिजर्व का 25,000 किधर जाएगा? वापस एक बार. Pre, sir. Pre. प्री. एक मिनट ना बेटा. Opening balance of pre. Yes, sir. प्री. फिर ये किधर जाएगा? 50,000 Appropriation, sir. 50,000. General reserve post, sir. पोस्ट. Yes, sir. 15,000 15,000, sir. It's a pre, sir. Pre. प्री. 60,000 पोस्ट. 60,000 post. एंड जनरल रिजर्व पोस्ट Post. माइनस P&L में से. एंड Yes, sir. 75,000 कहां से आया? 75,000, sir. Balance sheet. बैलेंस शीट से आया ना. बट आर यू गोइंग टू Yes. राइट 75,000 और बाइफर्केशन ऑफ 75,000? Bifurcation of 75,000, sir. And are you going to write 25,000 of P&L or bifurcation of that? Bifurcation, sir. हाँ. हाँ. तो देखो अभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर लिखा आपने? चलो लाइन बाय लाइन. हाँ. क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स में? Opening balance of जनरल रिजर्व. general reserve. In under ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 25,000 प्री में लिखा. हाँ. Pre. Yes, नेक्स्ट sir. Next, sir. 50,000. 50,000. क्या लिखोगे? 50,000, sir. Pres- ट्रांसफर कहां से मिला ये? Transfer from P&L. P&L. हाँ. जनरल रिजर्व को कहां से मिला? P&L, हाँ. sir. तो बोलो ना ट्रांसफर फ्रॉम P&L. वापस एक बार. Hmm. इसको क्या लिखोगे? 25,000 को. Opening balance of general reserve. हाँ. 25,000. हाँ. प्री Pre. में. और P&L एप्रोप्रिएशन को क्या लिखोगे? P&L appropriation, sir. Revaluation, sir. अरे बाबा ये 50,000 को क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन कहां से? Post, sir. Post, sir. Post. अरे पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? Sir. अब भी बताया 15-20 सेकंड पहले. गजनी से भी छोटी अपनी मेमोरी है. Transfer to P&L, sir. Transfer to P&L under ट्रांसफर टू P&L नहीं है बेटा. ट्रांसफर फ्रॉम P&L से आया है. P&L से आया है.
ये जनरल रिजर्व में जा रहा है, P&L से आया है, ट्रांसफर टू P&L या ट्रांसफर फ्रॉम P&L? ट्रांसफर फ्रॉम P&L सर। मिला ना इनको 50,000। हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम P&L सर। चलो वापस एक बार, हाँ क्या लिखोगी 25 को? ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अंडर प्री हाँ 20,000, देन हाँ appropriate transfer from the P&L post under general reserve 50,000. 50,000, हाँ ट्रांसफर फ्रॉम P&L। Yes sir. नेक्स्ट अभी क्या लिखेगी 15,000 को? 1 second sir. Sir, लिखेंगे opening balance in P&L. हाँ, ओपनिंग बैलेंस इन P&L 15,000, वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस इन P&L प्री कॉलम में, हाँ। नेक्स्ट 60,000 को क्या लिखेगी? Profit profit during the year sir. हाँ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर P&L कॉलम में डालेगी 60,000, Yes sir. करेक्ट? Yes sir. Yes sir. हाँ, प्रॉफिट अर्नड। और Yes sir. 50,000 को क्या लिखेगी? Transfer to general reserve sir. हाँ, निगेटिव 50,000, Negative 50,000 post वेरी column. गुड, पोस्ट कॉलम में। हाँ, समझा अभी क्या लिखना है? Yes sir. Yes sir. एंड देन रिवैल्यूएशन रिजर्व प्री में 50, 45,000। yes sir. Deduct 50,000 minus 5,000. Deduct 45 and total 45,000 under pre sir. प्री कॉलम एंड 5,000 माइनस प्लस 750 डेप्रिसिएशन का। 4250 sir. माइनस 5,000 प्लस 750 मतलब माइनस 4250, Yes sir. करेक्ट? एंड आर Yes यू sir. राइटिंग 75,000 एंड 25,000 और नो? No sir. हाँ, तो बाइफर्केशन ऑफ 75,000 एंड Yes sir. बाइफर्केशन 25,000, Yes. वी आर राइटिंग दैट, Yes sir. करेक्ट? Yes sir. This working note, if you answer it correctly, then your Yes. whole answer is correct. Yes sir. इजी है? Yes sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, बट आई एम नॉट, प्लीज डू नॉट राइट इट इन फेयर दिस आंसर, डू इट इन रफ, टैली योर बैलेंस शीट Okay sir. एंड विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन। चलो करो, ये लिया स्क्रीनशॉट? Yes sir. Over sir. इजी था बेटा? Yes sir. और इसके साथ साथ और कौन सा स्क्रीनशॉट लेगी? वर्किंग नोट नंबर, Analysis of profit. ये 2 तो sir. लिया, और वर्किंग नोट नंबर 3 sir. 3 का काई को लेना है? 6 का लो, Yes sir. ये करना है ना आपको। Yes sir. हाँ, ये नया था ना 50,000 5,000। Yes sir. Standalone or a consolidation concept. ओके, इजी। Yes sir. सो व्हाट इज न्यू इन दिस? एप्रिसिएशन और रिडक्शन, Yes sir. ठीक है। Yes तो sir. बेटा आई होप Yes you sir. understood this chapter, you understood Yes. the power of general reserve and P&L preparation. Yes sir. हाँ, तो एग्जाम में इफ यू प्रिपेयर जनरल रिजर्व एंड P&L का लेजर अकाउंट, तो दैट इज इजी एंड दैट इज माय टेक्निक, इट इज नॉट गिवन Yes. इन द स्टडी मैट, ओके? एंड Yes. प्री एंड पोस्ट इज वेरी इजी। प्री वाला पार्ट प्री में डालना है, पोस्ट वाला पार्ट क्रेडिट वाला पोस्ट अकाउंट में डालेंगे, एंड डेबिट वाला माइनस करेंगे, बट डोंट राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन का कुछ भी, बिकॉज बाइफर्केशन वी हैव टू राइट ऑफ टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है? Yes. सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट गिविंग यू टैलिड आंसर, और स्टडी मैथ से समझेगा भी नहीं, मतलब समझेगा, बट यू प्रिपेयर बाय योर ओन एंड देन चेक आंसर विथ योर स्टडी मैथ आंसर, फाइनल आंसर, बिकॉज माय वर्किंग नोट्स एंड स्टडी मैथ के वर्किंग नोट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। वर्किंग Yes sir. नोट्स, वर्किंग नोट्स आर इन Yes. माय स्टाइल, स्टडी मैथ के वर्किंग नोट्स मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, Difficult. हाँ थोड़ा सा, ओके? Mm. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, all of Yes you, sir. and please follow this process. हाँ, Yes sir. आंसर मैच करेगा ना बेटा? विजुअल आप जोक मारते हो बेटा, आंसर कैसे नहीं मैच करेगा? आंसर कंसोलिडेशन बैलेंस शीट पूरा सेम दिखेगा, वर्किंग नोट्स सिर्फ अलग दिखेंगे, कुछ भी बोलते हो बेटा आप। हाँ, ओके, एनी ठीक है. डाउट स्टूडेंट्स? अंजुम, कैसा था बेटा कंसोलिडेशन? डिफिकल्ट, इजी? सर मुझे पहले तो शुरू में तो डिफिकल्ट गया, लेकिन अब जब आपने ये क्वेश्चन समझाया तो इजी लगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 2 दिन मेहनत लो, यू विल गेट एवरीथिंग, डोंट वरी, ओके? ओके ओके। यस, संतोष यादव जी,
Yes, बोलिए। sir. Sir, actually, I wouldn't appear in September 2025. I would appear in exam next year, sir. So I started learning from this chapter only. यू आर It's been स्टार्टिंग a little विद, bit difficult to me. अच्छा पहले रिकॉर्डेड वगैरह कुछ देखा नहीं क्या आपने? Yes, yes, yes. अच्छा But ठीक है, not कोई so बात many, नहीं, sir. ठीक है। हर्षल बोलिए। सर एक्चुअली अभी तो इजी लग रहा है, पहले डिफिकल्ट लग रहा था मेरे को कंसोलिडेट का। हाँ और जो मैंने स्टडी किया था कॉलेज में, तो इससे मतलब लॉजिक जो आपने बोला ए टू हाँ। जेड, रिवेलेशन का, डेप्रिसिएशन का, नेचर और द इफेक्ट। तो सर और जो सर आपने यस 12 लिया था गवर्नमेंट ग्रांट्स का, तो बराबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था टोटल, हाँ ऑल क्वेश्चन आई हैड सॉल्व। एंड सर वो अभी मतलब इजी लग रहा है मेरे को, बट उसके लिए क्या स्क्रीनशॉट चाहिए थे सर मुझे, मतलब ठीक है, आपके पास। देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में देता हूँ। ओके सर, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू, सेशन ओवर।